Good afternoon, all of you. Can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. How was your MT yesterday? Not that great. Why? What happened? Ma'am, chemistry was hard. Chemistry was tough. Organic was okay, but physical was hard. Physical was hard. Okay. What about the organic part? You were able to solve or no? Yes, ma'am. Most of it we could solve. Okay, most of it you could solve. That's nice. We don't have any doubt class no, this week. No, ma'am. So you want me to discuss those questions of organic? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 1 minute. I'll see if I have the paper. Just give me a moment. Okay, is the paper visible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, this is the first question of organic. Which alcohol will react with fastest with HCl and anhydrous zinc chloride? What is HCl and anhydrous zinc chloride reagent called? Lucas reagent. Lucas reagent. Lucas And what is the mechanism for Lucas? SN1. SN1. So what order you will go for? Carbocation stability. So can I say B will give you the most stable carbocation? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, So ma'am. that will be 3 degree. All of you got this answer? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, 12th question I'm not able to. पेपर छोटा क्यों नहीं हो रहा है? I don't know. Ma'am, you could zoom out. I'm trying to do that. नहीं हो रहा है. छोड़ दो फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगा. मैम नीचे प्लस है वो दबाओ. प्लस दबाया तो और बड़ा हो गया ना. और माइनस हो नहीं उससे रहा है. ज्यादा जूम आउट नहीं होगा. नहीं वो मैक्सिमम है और माइनस हो नहीं रहा है. ठीक है ना. ये कहना इसे पहला वाला फिनॉल है, सेकंड वाला अल्कोहल है. एम आई राइट? Yes, ma'am. थर्ड वाला भी फिनॉल है और फोर्थ वाला अल्कोहल है. कैन आई से फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स? Yes, ma'am. So A and C will be more acidic than B and D. Between A and C, can I say C will be the most acidic because there is an electron withdrawing group? Yes, ma'am. Ma'am. So that was the most acidic. I think 12 भी आ गया होगा, correct? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Of course, ma'am. 13th one again direct question है. SN1. SN1 मतलब carbocation stability. Yes, ma'am. So answer will be option B. मैम इसमें डी क्यों नहीं होगा? D क्यों नहीं? नहीं क्योंकि टर्शरी ब्यूटाइल का स्टेबिलिटी ज्यादा है ना बेंजाइलिक से. ओके देखो मैंने कार्बोकैटायन का ऑर्डर दिया है आप लोगों को. Haven't I given tertiary butyl carbocation more stable than benzylic? Yes, miss, you had. Which is almost similar to allylic.
Carbocation stability order I have given you all. Okay, just Yes, check ma'am. in that. 14th question, the answer will be option B because there is no hydrogen on an electronegative atom like oxygen, nitrogen or fluorine, correct? Yes, ma'am. So it will Yes, not ma'am. form any hydrogen bonding. Aprotic polar solvent मिल गया था ये? DMS. Yes, DMS. Yes, ma'am. DMSO, yes. Okay. मैम हाँ बोलो. मैम सिर्फ लास्ट टाइम आप DMSO का फुल फॉर्म सिर्फ क्लैरिफिकेशन के लिए. डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड. ओके मैम. सल्फॉक्साइड ये होगा डाइमिथाइल. Okay, this is DMSO. Fine. Yes, ma'am. Okay. 16th question. This is Markovnikov's addition, correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So what will be the product? Option B. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Electrophilic addition. Yes, electrophilic addition. Very good. मैम हाँ बोलो. मैम इलेक्ट्रिशियन है समझ गई मैं. मैम सिर्फ मैंने सी ऑप्शन किया था क्योंकि मैम मैंने रिंग एक्सपेंशन किया था तो शायद वो आपके आंसर के हिसाब से गलत निकला. नहीं तो नहीं मैम नहीं सी देखो हो नहीं बट सी में कहना है से 2 ब्रोमीन ऐड हुए हैं यस मैम. और इधर रिएजेंट क्या लिया है आपने? HBr. तो मतलब H+ और Br- अटैक करेगा ना. ये तो 2 Br कहाँ से आएंगे इस पे? 2 Br के लिए you'll have to add bromine, not HBr. यस समझा? मैम. हाँ. यस मैम. Ma'am, जब ring bromine add expansion won't happen, no? Br2 लोगे तो रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा. Ma'am, here also the carbocation where it's formed there, ring expansion can't take place, no? कैसे होगा बताओ? डबल बॉन्ड इज इनसाइड द रिंग ना. Ma'am, Yes, that's what ma'am. it can't happen, I'm saying. that means कार्बोकटायन कैन आई से जब पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा. कार्बोकटायन इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड ऑन द रिंग ना. Yes, ma'am. अगर कार्बोकटायन यहाँ बनता यहाँ पर तो रिंग एक्सपेंशन हो सकता है. करेक्ट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. मैम हाँ बोलो. मैम but what if hydrogen shift could happen? Where? Hydrate shift from that methyl hydrogen will shift Wait. to. If मैम इसमें कार्बोकटायन तो शिफ्ट ही नहीं होगा ना. अगर ये कार्बोकटायन है तो रिंग एक्सपेंशन होगा. अगर आपका ये कार्बोकटायन है तो क्या शिफ्ट होगा इसमें? कुछ नहीं. Pretty कहाँ से stable. हाइड्राइड? ये 3 डिग्री है ऑलरेडी. क्या शिफ्ट हो सकता है इस पे बताओ? यहां से हाइड्रोजन शिफ्ट करोगे आप No, ma'am. to form 1 degree carbocation. Why would 3 degree go to 1 degree? Got it? Got it, ma'am. Okay. 17th question, did you get it? Yes, ma'am. Optically inactive पूछा है. Optically inactive तो last option होगा. DD. Yes, ma'am. Can I say this has a point of symmetry? Yes. Yes, ma'am. Center of मैम A क्यों नहीं होगा? A में तो देखो ना वो मैंने ये भी दिया है आपको कि वो लोग दोनों सेम प्लेन में नहीं है ना. तो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगा ना मैम. ऑप्टिकली एक्टिव होगा ना. इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉइंट ऑफ सिमेट्री कहाँ है? यस मैम. कहना इससे ये आगे है और ये H पीछे है और ये Yes, ma'am. मिथाइल ऊपर है और हाइड्रोजन नीचे है. तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ है? पॉइंट ऑफ सिमेट्री. यस मैम. हाँ तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है. गॉट इट? यस मैम. मैम C1. सी में तो वो बाइफिनाइल है ना. ये बाइफिनाइल तो रिंग रोटेट होगा ना. ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट्स है. तो जब रिंग रोटेट होगा तो क्या होगा? Plane will differ. Yes. Can I say this ring will become perpendicular to the other ring? Yes, ma'am. You remember I've done this. Yes, ma'am. ये SO3 है जैसे बाहर आ जाएगा आपकी तरफ और ये NO2 पीछे चला जाएगा. So these two rings are perpendicular और perpendicular है तो फिर this will not have any plane of symmetry, no point of symmetry. Got it? Okay, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. Then
18th question, incorrect पूछा है. Incorrect statement, can I say in SN2 transition state is formed? That is true. SN1 carbocation is formed is also true. In SN1 reaction, carbocation formation in the rate determining step is also true. SN2 reaction no SN2 में inversion होता है ना? Yes, ma'am. SN1 में racemization होता है ना? हाँ, SN1 में racemization. 19th you all got pinacol, pinacola. हाँ, ma'am. Same example I've done. You remember in class? Yes, ma'am. इसका आंसर होगा phenyl shift के बाद आंसर will be option B. Yeah, B. 20th, can I say it is Hoffman's elimination? Yes, ma'am. तो Hoffman's elimination में ये ग्रुप यहाँ से जाएगा, H कहाँ से जाएगा? यहाँ से जाएगा या यहाँ से जाएगा? Right side. हाँ, because Hoffman's product आता है less substituted alkene, so H will go from here and ना double bond. पता चला क्योंकि वो NR3 है इसीलिए ना. हाँ. ओके मैम. मैम तो जब भी NR प्लस रहेगा तो हॉफमैन्स करना है. Yes. ओके मैम. Uh, 27th question. इसमें क्या बनेगा? This is trans alkene and you are adding bromine. Bromine का addition trans होगा. Yes, ma'am. So here, did you all get this? What I'm writing? You'll get a mixture of erythroisomers here. Okay, so these two are going to be formed. Did you all get this? Yes, ma'am. Same example I think I've done in class also. Yes मैम. Yes, ma'am. Notes में भी है आपके लिए. 28th question. The number of cyclic isomers for C5H10 is X, and the number of open chain structural isomers for C5H10 is Y. Ma'am, 7. Open chain. 5 Open minus chain. It's 5 minus 5. 5 minus 5. Okay, let me check. Cyclic isomers मतलब एक ये होगा C5H10, एक ये होगा C5H10, am I right? Yes, ma'am. Yes, ये ma'am. सारे cyclic हो गए और open chain structural isomers. Open chain मतलब there will be one double bond क्योंकि 1 degree of unsaturation है इसमें. तो एक ये है. Structural ही पूछा है तो मतलब geometrical और optical नहीं लेने हैं. Yes. ये दूसरा है. फिर I think और एक होगा ना इसमें. नहीं, अगर इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया तो यही मिलेगा. हाँ सॉरी, नहीं यही 5 है. So 5 minus 5. 0. ये मिला था कि नहीं मिला था? मिला था. मिल गया मैम. 29th you all got. This was simple. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Chiral centers ये हैं. So answer will be 5. Correct? Yes, ma'am. Number of structural isomers possible for C6H6O3 containing benzene ring.
डू नॉट कंसिडर परऑक्सी, मतलब दो O साथ में नहीं रखने हैं, तो तीनों O को अलग रखना है। दिस इज रिपीट कर सकते हैं ये लाइन का मीनिंग क्या? कौन सा वाला? ये लिखा ना, डू नॉट कंसीडर पेरोक्सी। Peroxy means you cannot place two oxygen like this. This is peroxy group ना, यस मैम। मतलब दोनों ऑक्सीजन को एक ही कार्बन पे नहीं डाल सकते। अच्छा मैम, ओके। Anything else? ये 1 2 3 है, 1 2 4 1 3 5, तो ये 3 हो गए। और द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर C7H9N containing benzene ring। बेंजीन में 6 कार्बन आ गए और इसमें कितने हैं? 7। Anything else possible? So total how many I'm getting? X plus Y 8। ये क्वेश्चन आया था कि नहीं? किया ही नहीं। छोड़ दी। मैम नहीं आ रहा। अच्छा हाँ, you had options ना? Yes ma'am। मैम हाँ, मैम आप 29th में बोल सकते हो वो जो ऊपर वाला साइक्लोहेक्सेन है उसमें कायरल कार्बन नहीं होगा? कहाँ है उसमें बताओ? मैम वो जो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया ना ये पार्ट। ये पार्ट और ये पार्ट उसका सेम है ना? हाँ मैम, नहीं होगा ना? बट एक हाइड्रोजन है और दूसरा ग्रुप है ना? नहीं, कैसे? सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा होता है, डायगोनल प्लेन। यस मैम, अंडरस्टूड। हाँ So I think organic was very simple. मैम विदाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं आ सकता ना, वो कायरल है ही नहीं ना। नहीं, वो कायरल नहीं। मैम उसके पैरेलल में कोई सब्स्टिट्यूएंट होता तो क्या होता? किस पे? वो साइक्लोहेक्सेन के पैरा पोजीशन में कोई सब्स्टिट्यूएंट होता तो? हाँ, तो भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। यस मैम, ओके, थैंक यू। ज्योमेट्रिकल होगा पर उसमें ज्योमेट्रिकल होगा, जैसे ये ग्रुप दोनों ऐसे आगे हो सकते हैं, राइट? यस मैम। सपोजिंग दोनों मिथाइल है, तो दिस इज द सिस कॉन्फ़िगरेशन, करेक्ट? यस मैम। इसका ट्रांस भी हो सकता है। हाँ, व्हिच क्वेश्चन यू आर सेइंग? मिस अगर सब्स्टिट्यूएंट ऑर्थो और मेटा पे होता तो इट वुड तो उसका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ओके मिस। अगर दोनों सेम ग्रुप्स है सब्स्टिट्यूएंट्स, तो ऑर्थो वाला सिमेट्रिक है। ऑर्थो नहीं, सॉरी, 1 and 2 पोजीशन वाला, 1 and 2 पोजीशन वाला सिमेट्रिक हो जाएगा ना। सिस वाला ट्रांस वाला एक्टिव होगा। जैसे ये है, अगर कैन आई से सिस में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, यस मिस। और जो ट्रांस वाला होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये H है, this is the trans one. Can I say this will not have any plane of symmetry, no point of symmetry? So this is optically active. तो इसके दो फॉर्म्स होंगे, डेक्स्ट्रो और लीवो। This is inactive because it has a plane of symmetry. तो इसके टोटल स्टीरोआइसोमर्स पूछे हैं, अगर 1 2 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन के तो 3 होंगे। Got it? यस मिस।
28th question somebody asked. यस मैम। हाँ, इसमें क्या हुआ? नहीं, कुछ और आ रहा है। मैम मुझे इसके 6 है और इसके 5 ही है। किसके 6 है? एक्स वाले के, मतलब ये साइक्लिक आइसोमर्स 5 आए थे। हाँ, साइक्लिक तो 5 लिखे ना मैंने। तो मैम इसके तो 6 है ना। 6 कैसे हैं? एक तो ये है देखो, यस मैम। pent 1 in, pent 2 in, यस मैम। और बताओ कौन सा है? मैम मैंने गलती से नियो भी ले लिया था। इसको अगर तुम यहाँ शिफ्ट करते हो, ये मिथाइल को यहाँ पर, डबल बॉन्ड को यहीं रहने दो और मिथाइल को यहाँ शिफ्ट कर लो। कैन आई से Yes, दैट विल बी सेम एज लास्ट? यस मैम। ठीक है, सो इसके भी 5 ही आ रहे हैं। ओके मैम। Sir was telling me to give less questions of organic, but I said, "No, I'll give at least 10 of ऑर्गेनिक में मार्क्स आए हैं। so I told him at least 10 of the single answer and 4 of your integers. Sir बोले थे नहीं कम करो मैडम, कम। मैं बोला नहीं, मेरे को उतने तो देनी है। So at least तुमने स्कोर तो कर लिया ना? I was happy. Manas, this is the same level mains में आता है, ऐसे questions mains में आते हैं। जो एक्चुअल आपका मेंस होगा वो ऐसा ही होगा। I'm talking about the organic part. I have not seen the physical chemistry paper. So this time, sorry, I didn't keep anything difficult. I just kept the mains level का। ठीक है? Which means, Mansi, if we did understand these questions completely, then there's nothing to worry about in organic chemistry part for these chapters in JEE Main. No, this is what is going to be asked in your mains also. Somewhat like this. These questions are only, these are all mains level which I gave. So if you're able to solve these, that means organic is done for your mains. Okay? You'll get these type of questions only. So you don't have to worry anything about this. Physical, I will just check. I have not seen the questions. I'll check and I'll let you know. Because you all are saying physical was difficult. I haven't seen the paper. Okay, let me continue now. What is the last thing I've done here in class? Boiling point of alkanes. Boiling point. Boiling point. Okay, I completed boiling point, no? Yes. Ma'am. Okay. So third physical property you write down. And that is melting point. I had asked you all to solve aromatic hydrocarbons. Yes, I don't think you all must have done. ये MT के चक्कर में नहीं किया होगा for sure. Yes, किया अच्छा किया? नहीं किया। थोड़ा किया मैं। नहीं किया। But then when are you going to do now? Your class exams, school, college exams are going to start. Am I हाँ right? बस उसके बाद प्लीज। उसके बाद सोचो हाइड्रोकार्बन्स भी खत्म हो जाएगा तब तक। फिर हाइड्रो थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। You cannot give full time for your क्या बोलते हैं college studies, ना? अभी college studies तो you can do in 2 to 3 hours in a day. मैम हम लोग लेक्चर भी अटेंड नहीं करते हैं। लेक्चर अटेंड नहीं करते तो हम लोग को थोड़ा टाइम देना पड़ता है इसके लिए। अभी कौन से चैप्टर्स है केमिस्ट्री के? आई थिंक हैलोजन डेरिवेटिव्स है। नहीं पता मैम, कुछ भी नहीं पता। केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी है मैम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स।
काइनेटिक्स तो यहाँ पर हो गया होगा, आई थिंक ऑलमोस्ट डन। मैम हो गया काइनेटिक्स। हाँ तो फिर काइनेटिक्स यू वोंट फाइंड इट डिफिकल्ट। इलेक्ट्रो चलो ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रो। और हैलोजन डेरिवेटिव्स में ऑलमोस्ट 80% आई एम डन विद। यू नो व्हाट इज हैलोजन डेरिवेटिव्स, SN1 SN2 डिटेल में करना है, एलिमिनेशन करना है, वो पूरा आधा चैप्टर में मिलाकर। कायरल सेंटर्स पूछेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। करना पड़ता है, क्या? तो थियरी रट्टा मारना पड़ेगा। हाँ मस्त। हाँ मतलब वही जो मैंने समझाया है ना, दैट यू हैव टू पुट इन वर्ड्स, दैट्स ऑल। जो मैंने देखो तुमको देखो ये दिया था, क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन SN1 SN2। Yes, ma'am. Yes, ma'am. So all that is to be put in words. So you just read through the textbook once, you'll be able to understand. तो SN1 SN2 पूरा डिटेल में दिया हुआ है उधर। एलिमिनेशन रिएक्शन भी है, और ये वाला है क्या बोलते हैं, वर्ड्स रिएक्शन मैंने किया है ऑलरेडी इसमें अल्केन्स में। और मोस्ट ऑफ इट आई थिंक कायरलिटी उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज अ पार्ट ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स एंड यू नो व्हाट आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, एम आई राइट? Yes, ma'am. उसमें खाली लैक्टिक एसिड पढ़ना है तुमको और 2-क्लोरोब्यूटेन, जो तुमको पता है 2-क्लोरोब्यूटेन में कितने कायरल कार्बन है? 2-क्लोरोब्यूटेन में हाउ मेनी कायरल कार्बन? 1, हाँ बस तो इसके one. कितने आइसोमर्स होंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स? 2 2, 2 2 2 2 बस उसको फिशर्स में लिखना है आपको। 2 और लैक्टिक एसिड ये है, इसमें कितने कायरल कार्बन है? 1 1। तो इसके भी 2 आइसोमर्स होंगे, एम आई राइट? yes, ma'am. और एक टार्टरिक एसिड दिया हुआ है। ये 3 एग्जांपल्स दिए हुए हैं तुम्हारे HSC के टेक्स्ट बुक में। ये है टार्टरिक एसिड, इसमें 2 कायरल सेंटर है, Yes, राइट? ma'am. Yes, और ma'am. दोनों सेम है, तो इसके टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स 3 होंगे। 2 ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, एक मीजो होगा, करेक्ट? Yes, ma'am. हाँ तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज देयर, SN1 SN2 और एलिमिनेशन है, और थोड़े 2-4 रिएक्शंस और एक्स्ट्रा है, वो देख लेना। नहीं समझेगा तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? Chemistry paper organic will not be tough. You all will find difficulty in electrochemistry because that is not yet done for you. Correct? Yes, ma'am. Electrochemistry is totally new for you. Okay. Fine. Melting point. How do you define this term, melting point? Temperature required to go from solid to liquid or liquid. Yes. Can I say the temperature at which a solid changes into its liquid form? Yes, ma'am. Okay. Now melting point will depend on what? Dipole. Melting point depends on, Dipole. it depends on type of packing in the crystal structure. Can I say if the crystal structure has close packing, that means the molecules will be very close to each other? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So if they're very close to each other, can I say the force of attractions also will increase? Yes, ma'am. And what will happen to the melting point? Point will be high. Higher. Am I right? Because you will need more energy to separate the molecules then. So remember, if packing is more close, then the intermolecular attractions become more because the distance between the molecules becomes very less. Voids become very small. What do you mean by voids? Empty spaces. Yes, voids are nothing but empty spaces. Can I say the density also becomes higher? Yes. Yes, ma'am. Voids कम हो जाएंगे, अगर empty spaces कम हो जाएंगे तो density बढ़ता है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Melting point will increase because of close packing. Now in alkanes, it is observed that alkanes nahi, wherever there is symmetry, symmetrical molecules always pack more closer than dissymmetric molecules or asymmetric molecules, because packing is more always effective when the molecule is more symmetrical. समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ?
Yes, ma'am. Okay. It has been observed that alkanes with even number of carbon are more symmetrical than alkanes with odd number of carbon. तो किसमें better packing होगा? Even number. Even number. और even number में अगर packing closer हुआ तो can I say उसका melting point ज़्यादा होगा? Yes, ma'am. I'll show you this. I'll explain this with the help of a graph. If a graph is plotted for melting point against the number of carbon atoms in a molecule, then the graph obtained is of this type. You get a zigzag graph. Now, what does this zigzag graph tell you? Tell me what you can interpret with this. Increasing then decreasing. Supposing this is your C1. C1 मतलब क्या है? Methane है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ये कौन सा होगा? Ethane. Ethane. Ethane, ये Propane. propane, butane. Pentane. यार मैंने गड़बड़ कर दी. Okay, so can I say C2 will have a higher melting point than C1 and C3? Yes, ma'am. And C4 will have a higher melting point than C3 and C5? Yes, आ रहा ma'am. है कि नहीं समझ में? Yes, ma'am. ये आपका C2 है, ये C4 है, C6, C8 and C10. So C4 has higher melting point than C2 and C3. Same way C6 will have a higher melting point than C5 and C7 and so on. This is because alkanes with even number of carbon being more symmetrical, they pack more closer. Will you plot the graph? This week, how many lectures I'm having with you? Two. Only 2? Yes, ma'am. Okay. You're asking which will have more melting point between C2 and C5. It will be C5. Wait, I should draw it. C5 का ज़्यादा हो. Okay, C5 will be more than C2. Ma'am, so more the number of carbon, more. Yes. Okay. Yes. What about isomeric alkanes? Supposing I take N-pentane and neopentane. Can I say same number of carbon, same number of hydrogen? Yes, ma'am.
But then what about the melting points? Neopentane का ज्यादा होगा. Reason? Symmetric. Symmetric. Can I say this is highly branched? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Branching increases the spherical nature of the molecule. That means the molecule tends to become more spherical. And you know, spherical molecules, they will pack more closer. Spheres can be packed the most closest. Do you know that? Yes. Yes, ma'am. So branching increases the spherical nature, and therefore packing becomes closer, and hence the melting point increases. So you can write that down. In case of isomeric alkanes, with increase in branching, the molecule becomes more spherical. With increase in branching, the molecule becomes more spherical. Resulting in more compact packing. And therefore the melting point will be higher. Did you all finish with this? Done, ma'am. Yes. Okay. The last physical property now which I'm taking. Ma'am, Bolo. this you are telling when number of alkanes are same and both are Number of symmetric, carbon right? are same. Number of carbon. Yes, ma'am, sorry. And they both should be symmetric. Then we consider this criteria, no? If the number of carbon are same, can I say they are isomeric? Yes, ma'am. तो isomeric में अगर branching ज़्यादा होता है तो it becomes more spherical with increase in branching, and therefore the melting point becomes higher. Yes, ma'am. The last physical property is solubility. Right, alkanes are sparingly soluble in water. What do you mean by sparingly soluble? Slightly. Partially. Sparingly soluble means almost insoluble. Okay, almost insoluble. Okay. Why are alkanes sparingly soluble in water? Can I say sorry? They're non-polar. They are non-polar, and that is why they are hydrophobic. Hydrophobic means what? Don't like water. Yes, hydrophobic means they hate water, and the reason being they are non-polar. You know, like dissolves like. Yes, ma'am. Okay, so polar solutes dissolve in polar solvents like water, but alkanes being non-polar, their solubility in water is almost negligible because they are hydrophobic. So write it down. Alkanes being non-polar substances, their solubility in water is negligible. And they are hydrophobic.
hydrophobic. Ma'am, could you repeat the entire thing from last time? Alkanes being non-polar और क्या बोला था मैंने, मैं भूल गई. Means I will not get the same sentence. Could you repeat it like? Alkanes are non-polar, so they have negligible solubility in water. Alkanes are non-polar, so their solubility in water is negligible. And ma'am, you also said na they are hydrophobic. Yes. Yes, ma'am. And they are hydrophobic. Hydrophobic means what? Move away from water. Yes. Also add a statement with increase in the number of carbon. With increase in the number of carbon, the hydrophobicity increases. With increase in the number of carbon, the hydrophobicity increases. With increase in the number of carbon, the hydrophobicity increases, and therefore solubility का क्या होगा? Decreases. And therefore solubility decreases. I repeat, with increase in the number of carbon, hydrophobicity increases and the solubility decreases. मैम थोड़ा negligible solubility वाली line repeat करोगे? Alkanes are non-polar and hence their solubility in water is negligible. That is, they are hydrophobic. Alkanes are non-polar, and their solubility in water is almost negligible. That is, they are hydrophobic. Got this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. I have done the physical properties here in details with the entire explanation for each and every property. इसके आगे अब जो भी मैं functional groups लूंगी या alkenes, alkynes and all that, I am just going to tell you all that boiling point increases with increasing number of carbon. You will just note it down because you know with increasing number of carbon what is going to happen. Van der Waals attractions will increase. Am I right? Yes, ma'am. So henceforth, abhi jab bhi physical properties hoga, I'll be going fast in that because all the reasons, all the explanations I have given you right here. Okay, ma'am. Fine. So now I'll move on to the chemical properties. That means the reactions shown by alkanes. Right on chemical properties of alkanes. Yes, Shweta, alkanes are soluble in organic solvents. Yes, you can add it over there. Alkanes are soluble in organic non-polar solvents like benzene, carbon tetrachloride, and so on. Carbon sulfide. Kisme? Carbon sulfide, CS2. Carbon disulfide. Yes, CS2, carbon disulfide. Carbon disulfide, carbon tetrachloride, benzene, toluene, इसमें सब dissolve होते हैं. Okay, now let us start with the chemical properties. What reactions will be shown by alkanes? Which type of reactions? Substitution. Very good. Can alkanes undergo addition reactions? No. 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 And why they cannot show addition reactions? Less electron density. Yes, they don't have any pi bonds. So they are saturated, so no addition reactions. What about the type of substitution they can undergo? Electrophilic, nucleophilic, or free radical? Free radical. And what is the reason for that? Say this is methane. Is this molecule polar? No. Any delta plus, delta minus? No. So if I add an electrophile to this, will the electrophile be attracted to alkane? No. No, ma'am. If I add a nucleophile, will it be attracted to alkane? No. So no attraction means no reaction. So electrophiles and nucleophiles are not attracted to alkanes because alkanes are non-polar. और attraction नहीं होगा तो reaction नहीं होगा.
So alkanes don't react with electrophiles and nucleophiles. The reactions which they show are free radical substitution reactions. Halogenation. Yes. So first reaction I'll start with is halogenation. In fact, I've done this earlier. If you remember, I've done this in reaction mechanisms. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'll do little more here. Methane on chlorination in presence of diffuse sunlight. Tell me the product here. CH3Cl. This is a monochlorinated derivative. What if I use excess of halogen? CCl4. CCl. Yes. If excess of halogen is used, then one by one all the hydrogen will get replaced by halogen. जिसका नाम मिथाइल क्लोराइड है कॉमन नेम, इसका नाम क्या है? Methyl dichloride. Methylene dichloride. Okay. CH2 group is called as a methylene group. क्या बोलते हैं इसको? Methylene. Methylene dichloride. This is chloroform. CHCl3. Am I right? Yes, ma'am. Yes, yes. Further chlorination of this would give you carbon tetrachloride. But these happen only when you use excess of halogen. What if you use excess of alkane? We will stop at the first step. Yes. Monohalogenated will be the product. So just make a note of that. In presence of excess of halogen, we get polyhalogenated products. In presence of excess of halogen, we get polyhalogenated products. Could you please repeat? In case of excess of halogen, we get polyhalogenated products. But when excess of alkane is used, the reaction stops at monohalogenated stage. Ma'am, in the solubility part, you are told that alkanes are not soluble in water, right? Huh. And then, ma'am, you said that they are soluble in some solvents. Can you repeat that? Non-polar solvents like benzene, toluene, carbon tetrachloride, carbon disulfide. Okay, ma'am. Thank you. Ma'am, please see the chats. What do you want me to repeat, Manda? No, ma'am, you just repeated it right now. That was about it. Okay. So alkanes are soluble in benzene, toluene, and CCl4, CH2, and so on. Fine. Yes, ma'am. Thank you. Okay, did you finish writing this? Do you remember the mechanism of this process? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, tell me the mechanism. I'm writing it from the right hand side. Cl breaks Cl2. Okay, chlorine bond breaks when you add a photon of light. Yes, ma'am. It breaks homolytic. This will attack methane. Methane से क्या ले लेगा वो? H. ले लेगा. HCl बनेगा CH3 free radical. Cl. हाँ. Yes, ma'am. ये होता है, ये स्टेप को क्या बोलते हैं? इनिशिएशन, करेक्ट? Yes, ma'am. Yes, yes. ये दोनों स्टेप्स को क्या बोलते हैं यहाँ पर? Propagation. Propagation. और टर्मिनेशन में क्या होता है? Cl plus Cl. फ्री रेडिकल्स आपस में कंबाइन होते हैं, करेक्ट? Yes, ma'am. These are all termination steps.
Ethane formation. Yes, ethane is very, very less, in fact negligible. Okay, ma'am. So this is the mechanism of free radical substitution on or halogenation of alkanes. You all finished writing this? Well, ma'am. मैम हाँ. आपने रिएक्शन मैकेनिज्म में एक रीजन बोला था, आप डिफ्यूज सनलाइट क्यों यूज करते हैं, आपको रिपीट कर सकते हैं? Diffuse sunlight मतलब अगर ordinary sunlight लिया, can I say you will be providing it with different wavelengths? Yes, ma'am. And sunlight acts as a catalyst. Catalyst means what? Speeds up the reaction. हाँ, अगर वो wavelength आपने जो देना है उसकी जगह हायर एनर्जी वाला वेवलेंथ दे दिया, अगर हायर एनर्जी मतलब कैन आई से हायर एनर्जी मींस लॉन्गर वेवलेंथ. हाँ, तो एक लॉन्गर वेवलेंथ पे अगर वो एक्सपोज हो गया तो रिएक्शन और फास्ट हो जाएगा. इतना फास्ट हो जाएगा कि इफ यू वांट टू एंड द रिएक्शन इज एक्सप्लोसिव नहीं, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक मींस व्हाट? Large amount of energy. हाँ, तो तुम ऑलरेडी कैटलाइज कर रहे हो बाय प्रोवाइडिंग इट विद डिफ्यूज सनलाइट. डायरेक्ट सनलाइट में उसका रिएक्शन जो टाइम है वो और कम हो जाएगा. तो जो एनर्जी लिबरेट होने वाला है धीरे धीरे इन स्मॉल पैकेट्स, कैन आई से दैट विल बी कैटलाइज्ड टू लिबरेट ऑल द एनर्जी इन अ सिंगल ह्यूज पैकेट. Yes, ma'am. Yes. So what will happen to the reaction vessel? Explode. So do you want that to happen? No, ma'am. I thought you would say yes. Okay. ठीक है. So you cannot add direct sunlight in this reaction vessel. Fine. Chlorination में direct sunlight नहीं use कर सकते हो, bromination में use कर सकते हो. I'm coming to that part. Okay. Okay, now if I take, say, propane. Propane on monochlorination will give you how many products? Give me the number of products. Monochlorinated कितने बनेंगे? So, miss 2. 2. Can I say 2 chloro and 1 chloropropane? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Which according to you should be major? First. And what is the reason for that? Second one. Ma'am, second. Alpha hydrogen. Free radical is more stable in second. Free radical is more stable in the Yes, Hyper ma'am, free conjugation. radical is more. So first one according to you will be the major? No, ma'am. Ma'am, second one. Second. Okay, Shivam, you want the previous page? Okay, why second one? You have to give me the answer. Ma'am, because free radical will be 2 degree in that. नहीं, free radical will be 2 degree कैसे? H निकलने वाला है. Am I right? Yes, ma'am. Shivam, this is done. Okay. ये H निकलेगा तो 2 degree free radical बनेगा. ये H निकलेगा तो 1 degree. First one, major. So first one is okay. Now let us see. I'll tell you how to calculate the percentages of these forms. Ma'am, second. We'll see. We'll see. Just write down this selectivity factor for chlorination.
selectivity factor for chlorination. It is observed that the selectivity factor of chlorination a 3-degree hydrogen is removed 5 times faster than a 1-degree hydrogen. What did I say? A 3-degree hydrogen is removed 5 times faster than 1 degree. And a 2-degree hydrogen is removed 3.8 times faster than 1 degree. This is the selectivity factor for chlorine. Chlorine has to come and remove a hydrogen from the molecule. Do you agree? Yes, ma'am. Yes, miss. It removes a 3-degree hydrogen 5 times faster than 1 degree. And a 2-degree hydrogen is removed 3.8 times faster than 1 degree. The selectivity factor we can actually experimentally find this out by kinetics, determining the kinetics of the process. You know what is kinetics? Yes, ma'am. Kinetics deals with what? Rate. Rate. Rates of a chemical reaction. And Yes, ma'am. thermodynamics deals with what? Stability. Ability. Feasibility. 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 Okay. Entropy. Okay. Thermodynamics deals with the energy changes during a process. Yes, ma'am. Kinetics deals with the rates of a chemical or physical process. Fine. Okay. Selectivity factor for chlorination, all of you have written. Yes, Yes, ma'am. Chlorine abstracts a 3-degree hydrogen 5 times faster than 1 degree, and it abstracts a 2-degree hydrogen 3.8 times faster than 1 degree. Now this is selectivity factor. But for chlorination, even probability factor comes into picture. Now what is this probability factor? I'll explain. Probability means the number of hydrogen atoms of each kind. Now in this compound of propane, how many primary hydrogen are there? How many primary carbon? 2. 2. ये primary carbon है, ये primary carbon है. Do you agree? Yes. Yes, Can I miss. say all these 6 hydrogen are primary hydrogen? Yes, ma'am. Yes. Now this is the secondary carbon. All these 2 hydrogen are secondary hydrogen. Am I right? Yes, ma'am. Okay. Now the probability in which they are present, like, can I say there are 6 primary hydrogen and 2 secondary hydrogen? Yes, ma'am. Can I say all these 6 are equivalent hydrogen? What do you mean by equivalent Yes. hydrogen? Attached to the same group. Equivalent hydrogen are those which, when replaced by any other group, will give you the same product. If I replace any of these 3 hydrogen or any of these 3 hydrogen by, say, chlorine, will the product form be same? Yes, ma'am. So these are equivalent hydrogen. तो इसमें ये 6 जो हैं वो equivalent hydrogen है. You understood this? Yes, ma'am. Okay. So the ratio in which the primary hydrogen are abstracted to that of a secondary hydrogen. What is the probability that chlorine will come across a primary hydrogen more easily as compared to a secondary hydrogen? 3:1. Yeah. Can I say 6:2? That is 3:1. Yes, ma'am. Okay. So probability factor also is there. There are 6 primary hydrogen and 2 secondary hydrogen. For chlorination, you have to combine both selectivity and probability. Now pay attention on how I'm calculating. How many primary hydrogen are there in the molecule? 6. 6. Okay, so 6 is the probability. और उसका selectivity factor क्या है primary hydrogen का? 1. 1. How many secondary hydrogen are there in the molecule? 1. 2. 2. 2 into 3.10. And what is its selectivity factor? 3.10. 3.8. What is the overall reactivity of primary hydrogen? 6. Overall reactivity of secondary hydrogen? 7.6. Total reactivity of the compound? 13.6. 13.6. So what will be the percentage of this product where primary hydrogen is replaced? 6 by 13 by 13.6. Very good. That will be 6 divided by 13.6 into 100. So this will give me the percentage of the primary product. That means this one. 100 minus this will give you the percentage of the secondary product. Or you can simply calculate percentage of the secondary product will be 7.6 divided by 13.6 into 100. So give me these values.
What is 6 by 13.6? 44 something. So can I say this will be around 56%? Did you understand how to calculate the percentage? Yes, ma'am. Yes, Ma'am, ma'am. can you explain selectivity factor again? Selectivity factor is actually experimentally determined through kinetics. It is observed that a 3-degree hydrogen is removed 5 times faster than 1 degree from a molecule by chlorine, and a 2-degree hydrogen is removed by chlorine 3.8 times faster than 1 degree. So this is the selectivity factor for chlorination. Ma'am, if Along there with would be selectivity tertiary, factor, हाँ, if there would be इसमें tertiary tertiary, hydrogen है then ही नहीं 5 ना. times. हाँ, नहीं अगर मतलब अगर tertiary होता तो 5 होता times, तो right? 5 times लेते ना. Okay, ma'am. Probability factor में क्या लिखना है? Probability factor, just write down the number of hydrogen of each type. Okay, ma'am. मैम इक्विवेलेंट हाइड्रोजन का क्या रोल था इसमें? Equivalent hydrogen means those hydrogen which when replaced by any atom will form the same यस product. मैम, सेम प्रोडक्ट. बट मैम इसमें कुछ काम नहीं है ना? किसमें? प्रोबेबिलिटी फैक्ट मतलब परसेंटेज जो आपने निकाला वो. इसमें 2 ही प्रोडक्ट आ रहे हैं क्या? Am I right? यस मैम. 2 ही प्रोडक्ट आ रहे हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन सेम इक्विवेलेंट है. ओके, इसलिए मैम. तो कंसीडर देम टुगेदर. फाइन. ओके मैम. Ma'am, so selectivity factor is same for different compounds, but probability factor depends on the compound. Yes. Okay, ma'am. And this selectivity factor is only for Chlorination. chlorine. Bromination का अलग आएगा. I'm going to give you those values also. And Ma'am, can you give one more example for this? I'm giving you 2-3 more. Just copy this first. Ma'am, so for 1 degree product, we have to calculate like 1 degree hydrogen का सारा, and then for 2 degree product, 2 degree hydrogen, right? Yes. Okay, ma'am. ma'am 1 degree product मतलब जिसमें 1 degree hydrogen को chlorine replace हुआ है. करे. हाँ. Okay, ma'am. Ma'am, how did you get 2 degree as 2 into 3.8? कितने हाइड्रोजन है 2 डिग्री के? अच्छा, we have to check the reactant Number of part. hydrogen, that is the probability. Into Okay, its ma'am. selectivity, that is 3.8. Okay. Probability is number of hydrogen, right? Of that type, yeah, of that kind. Okay, ma'am. Ma'am, how will we get to know that which is 56 and which is 44? ये किसका है? प्राइमरी प्रोडक्ट, प्राइमरी हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है तब हो रहा है ना 6. Yes, ma'am. तो इन दोनों में से प्राइमरी हाइड्रोजन जो रिप्लेस हुआ है वो कौन सा प्रोडक्ट है? ये वाला है ना. हाँ मैम. देखो प्राइमरी हाइड्रोजन को रिप्लेस किया ना क्लोरीन ने यहाँ. अच्छा, ओके मैम. ओके, थैंक यू. मैम जो वो वैल्यूज है वो आपको एक्सपेरिमेंटली आया ना? ये वाला एक्सपेरिमेंटली है. हाँ. ओके. Done. All of you are done with this? Done, ma'am. इसका क्लोरिनेशन करेंगे तो कितने प्रोडक्ट्स आएंगे आप बताओ? 2. मोनो क्लोरिनेशन. 2. So if just by looking at this, could you identify the major one? First one. First. We expect the first one to be major. Yes. But experimentally we'll see whether we are getting the first one as the major. Okay. Can I say this is primary hydrogen, primary hydrogen, primary hydrogen? Yes, ma'am. And all these are equivalent. All these 9 hydrogen are equivalent. Do you agree? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 9 into 1. हाँ. और इसका क्या होगा? 1 into 5. 5. Very good. So primary hydrogen है कितने? 9. और उसका selectivity factor कितना होता है? 1. Secondary hydrogen है कितने? Sorry, secondary नहीं, tertiary. 1 है और into 5 into 5. तो ये कितना हो गया? 5. This is the reactivity of tertiary hydrogen. This is the reactivity of primary hydrogen. What is the overall reactivity of the compound? 14. 14. उसमें से primary वाला कौन सा होगा?
प्राइमरी 9 प्रोडक्ट, upon 14. हाँ प्राइमरी प्रोडक्ट का परसेंटेज दैट विल बी 9/14. मैम 64. 9/14 is 64. तो Approx दूसरा 64. हाँ तो ये 64% है. तो कैन आई से अप्रोक्सीमेटली 36 होगा. Yes, ma'am. तो अब बताओ मेजर कौन सा हुआ. Second. समझा. तो कैन आई से प्रोबेबिलिटी आल्सो प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन क्लोरिनेशन. Yes, ma'am. खाली सिलेक्टिविटी नहीं देखना है, इसमें प्रोबेबिलिटी को भी चेक करना है. प्राइमरी ज्यादा क्यों मिला? क्योंकि द प्रोबेबिलिटी रेशियो इज 9:1 फॉर प्राइमरी हाइड्रोजन एंड टर्शियरी हाइड्रोजन. एम आई राइट? Yes, ma'am. मैम प्राइमरी तो 8 है ना उसमें। तू एक लोग बात कर रहे तो भाषा 8 कैसे है बच्चा? 9 है ना. 3 इधर है, 3 इधर है, 3 इधर है ना. सॉरी मैं प्रोडक्ट में देख रहा था मैम। अच्छा अच्छा, प्रोडक्ट में नहीं, कंपाउंड ओरिजिनल रिएक्टेंट में. करे पिज्जा पनीर चिलीज मस्त पाव nachos अगं कधी की ते केला आवनी जन्म तुम्हा राहिल. माउथ सॉरी All of you understood the second one? Yes, ma'am. Yes, miss. Okay, I'll give one more. Can I proceed? Ma'am, here the major product is the second one, right? Major product is the Sorry. Second one, right? ये वाला है ना. हाँ. हाँ, क्योंकि प्राइमरी का रिएक्टिविटी कितना है? 9 है ना. Out of the total reactivity of 14, so this is Yes, going to be ma'am. the major, ना. Can I go to the next? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 1 minute. अच्छा. None. Oh. Done. How many products here on monochlorination? 4, ma'am. Yes, Yes, there'll be 4. Four without stereoisomers. Do you agree? Yes, ma'am. From which stereoisomer it will be 6, right? With stereoisomers it is 6. So these are your 4 products. So now let us calculate the percentages. Can I say this is primary, this is also primary? Yes, ma'am. Yes, miss. This is also primary. But these 3 hydrogen are not equivalent as these 6 remaining hydrogen, primary hydrogen. Why are these 3 not equivalent as these 6? Because they will not get the same product. Very good. Because can I say H यहाँ से replace हो या यहाँ से replace हो, एक ही product आएगा? Yes, That will be ma'am. this one, last one. But if I replace any of this hydrogen, the product form will be different. First. The first one, yes. So treat this primary separately. Take it as primary dash. Okay. You got it? Why I took it separate? Yes, ma'am. Ma'am, because Not equivalent, it is that's not why, right? equivalent. Because these 3 are not same as these 6. These are your secondary hydrogen and this is a tertiary hydrogen. Okay, how many primary hydrogen in the molecule? 6. Uska selectivity batao. 1. 1. Overall reactivity of those 6 primary hydrogen is 6. Yes, ma'am. How many primary dash? 3. 3. Selectivity is 1. How many secondary hydrogen? 2. 3.8. And how many tertiary hydrogen? 1 into 5. 1 1 into into 5. 5. So I think you must have now known कि कौन सा ज़्यादा major होगा. Overall reactivity बताओ. 21.6. सबसे major कौन सा होगा इसमें? 1 Third degree. one. 2 degree.
2 डिग्री 2 डिग्री 7.6 वाला मतलब ये वाला 2 डिग्री वाला ये है. Am I right? Yes, ma'am. So this is going to be the major. और सबसे माइनर कौन सा होगा? 1 degree 1 डिग्री डैश मतलब ये वाला. इसमें वो 1 डिग्री डैश हाइड्रोजन रिप्लेस्ड है, करेक्ट? Yes, ma'am. इसका सबसे कम होगा. Do you understand this? Yes, ma'am. मैम सेकंड वाला 1 डिग्री 2 डिग्री है. सेकेंड वाला हाँ ये 2 डिग्री H निकला है ना यहाँ से. देखो 2 डिग्री वाला H रिप्लेस हुआ है ना क्लोरीन से. हाँ मैम ओके. मिस आपने वो 1 डिग्री डैश क्यों कंसिडर किया? क्योंकि वो 3 जो हाइड्रोजन है 1 डिग्री डैश वाले दे आर नॉट सेम एज दोस 1 डिग्री जो 6 दिए ना मैंने पहले वाले. क्योंकि वो सिमेट्रिकल नहीं है इसलिए. ये हाइड्रोजन को अगर आप रिप्लेस करते हो क्लोरीन से that will give a different product as Yes, miss. when these hydrogen get replaced by chlorine. Correct? ओके मिस. मैम तो आपने लेफ्ट वाले को मतलब 1 डिग्री डैश में लिया क्योंकि वो और ऊपर वाला सेम है इसलिए ना. हाँ ये दोनों सेम है ना. तुम यहाँ हाँ, पे एक Cl ले आओ या मिनट. यहाँ पर वो सेम ही होगा. तो इनको साथ में ले लो. समझा? All of you finished writing this? Yes. Done, ma'am. I'll write one more here only. This compound on monochlorination will give you how many products? Miss 5. 4 5. No. 3. Yes. ऑर्थो पैरा Which other? No, miss out. Same one. Any other? No, miss. Did you all understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What if I put chlorine here? Equivalent is last. It will be same as last one. What if I put chlorine here? Second one. Same as second one. What if I put chlorine here? Second one. same as the second one. अब इसमें से मेजर बताओ कौन सा. टर्शरी हाइड्रोजन कितने हैं मॉलिक्यूल में? 1 नहीं 2. 2 2. ये टर्शरी कार्बन है. Do you agree? Yes, ma'am. And both these are equivalent. Yes, ma'am. So tertiary hydrogen are only 2. और उसका selectivity factor क्या है? 5 5. 10 हो गया. Secondary hydrogen बताओ. अब इसमें 2 18. तरह के secondary hydrogen है. 2 तरह के मतलब? 2 dash 2 degree or a dash. 2 degree dash. हाँ ये 4 ये और ये. Can I say ये same है? Yes, miss. Yes, ma'am. 8 into 3.8. 8. ये same है फिर green वाले? Yes ma'am. Yes, ma'am. Wait, ma'am, didn't get it. The ones which are marked in blue. Can I say those hydrogen are equivalent hydrogen? That means if you put chlorine here or here, can I say the product will be same? Yes, Yes, miss. Ma'am. हाँ तो ऐसे इक्विवेलेंट हाइड्रोजन कितने हैं? सिर्फ एक इधर है और एक इधर है तो 2 है ना. और कौन से Yes, हाइड्रोजन है? ये टर्शरी है. डू यू एग्री? Yes, ma'am. Yes, ma'am. टर्शरी का सिलेक्टिविटी फैक्टर क्या है? 5. 5. So 2 5s are 10 है. So reactivity of these hydrogen is 10. Am I right?
अब ये Yes, रेड ma'am. वाले जो हैं, रेड वाले हम टेकिंग एज 2 डिग्री, और जो ग्रीन वाले हैं वो क्या ले लूं? 2 degree 2 degree dash. dash. मैम both are 8 right? हाँ, बट देन दोनों के प्रोडक्ट्स तो सेम ही नहीं है ना प्रोडक्ट, हाँ मैम। तो परसेंटेज तो मतलब चाहे दोनों का सेम, इसका और इसका परसेंटेज सेम आएगा। डू यू एग्री? यस मैम। Yes, ma'am. बट यू कैनॉट टेक देम कंबाइन ना। हाँ मैम। कंबाइन ओके तो मैम। अगर तुम बोलोगे तो 90% आ जाएगा ना ये। हाँ हाँ मैम बराबर। 90 नहीं होगा, इसका 45 होगा, इसका 45 होगा। समझा कि नहीं? यस यस मैम। Yes, ma'am. ओके, सो नाउ 2 डिग्री वाले कितने हाइड्रोजन है? 8. 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, और उसका सिलेक्टिविटी फैक्टर कितना है? 3.8 3.8। 3.8. 3.4 इसका भी कितना है? 8 है। अप्रॉक्स 30। 30.4 30.4। ये टोटल कितना हो जाएगा? 70.8 70.8. हाँ, उसमें से ये 30.4 का परसेंटेज 45 आना चाहिए। आई फील जस्ट चेक। थ्री 304/708 कितना आ रहा है? 42.9 ऐसे कैसे 100 क्यों नहीं आ रहा है टोटल? मिस क्योंकि टोटल 100 नहीं है, 70.8 है. टोटल 100 थोड़ी आएगा। मिस 3 डिग्री का 1/7 14% आएगा. मैम टोटल तो 100% ही होता है ना हमेशा। 3 डिग्री का 14% है। अच्छा, हाँ हाँ 14, वो मैंने 10% गलती से ले लिया, सॉरी। यस. इसका कितना आ रहा है? 14%। यस मैम। तो इसका कितना आ रहा है? दोनों का सेम होगा ना? 43 अप्रॉक्स। यस मिस 43. तो मैम इसमें तो 2 मेजर हो गए ना। हाँ, ये दोनों प्रोडक्ट्स इक्वल अमाउंट्स में बनेंगे। गॉट इट? यस मैम। All of you understood this part? Yes, ma'am. Yes ma'am. Thank you. You will be able to solve now? What मैम? ये ऐसे परसेंटेज निकालना। Yes, ma'am. हाँ मैम। अच्छा, ये जो सिलेक्टिविटी फैक्टर दिया था मैंने, ये क्लोरीनेशन का दिया था। अब ब्रोमिनेशन का लिखो। सिलेक्टिविटी फैक्टर फॉर ब्रोमिनेशन। A 3 degree hydrogen is removed by bromine 1600 times faster than 1 degree, and 2 degree is removed 82 times faster than 1 degree. So here can I say the major product अगर 3 degree hydrogen है तो 3 degree वाला ही होगा। Yes, ma'am. आ रहा है कि नहीं समझ में? Yes, अगर ये कंपाउंड भी ले लेती हूँ, इसमें प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं? 9. और उसका सिलेक्टिविटी कितना है? 1. 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 1. 1 और into सिलेक्टिविटी 1600. 1609 हो जाएगा ये। यस मिस टोटल. ओवरऑल कितना हो जाएगा? मिस वो 1609 टोटल होगा. 1609 total. अरे हाँ, सॉरी यार, Total 16.9. too tired, I don't know what is going on, talking since morning. हाँ ठीक है। So इसमें से टर्शरी वाला कितना होगा? परसेंटेज ऑफ टर्शरी 99%. 1600 डिवाइडेड बाय 1609। 99. समझा ना? Yes, ma'am. तो अगर Yes, ब्रोमिनेशन है miss. तो हमेशा मेजर, अगर टर्शरी है तो टर्शरी दे देना। समझा? You don't have to Yes. Yes, calculate. miss. हाँ। So now I'll ask you, which is more selective halogen, bromine or chlorine? Chlorine. Chlorine. Bromine. Bromine. Yes, bromine is selective. It selects Bromine. a particular type of hydrogen. Do you agree? Yes, Yes, ma'am. miss. Chlorine मैम ऐसा नहीं है। iodine and chlorine and all. अभी बता रही हूँ।
Chlorine is not as selective as bromine. Chlorine में जो मिलता है चलेगा. Am I right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So bromine is more selective than chlorine. Write it down. Bromination of alkanes is highly selective reaction. Bromination of alkanes is highly selective. Ma'am, because there's a huge percentage gap, right? Because there is? It's a huge gap in the percentage of. Yes. 3 degree hydrogen है तो वो उसी को select करेगा ना, rather than going for 1 degree hydrogen. Am I right? Yes, ma'am. Now kinetics can be determined, or the rates can be determined for those reactions which occur at moderate rates. Do you agree? Can you determine the reactions of the rates of reactions which are going to occur at very high speeds? No. Not really. Fast reactions के लिए can No. you determine the rates? No. How do you define fast reactions? Can I say those reactions which occur in less than a minute? Yes, ma'am. Can you determine the rates of such reactions? No. Reason? Not easy. Why is it not easy? Is my question. Because it's too fast. Because the time we check the reaction, the rate, By the time next you second it start, changes. by the time you start checking for the rates, can I say the reaction must have already got over? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So for very fast reactions, you cannot determine the rate. Can I say same is true for very slow reactions? Yes, ma'am. If a reaction takes in more than 200 years, can you determine its rate? No, ma'am. No. I know. will die. Yes, Because you have to keep waiting. we will not. We cannot wait now for 200 years. Waste of time. Reaction rate check करना है तो मुझे 200 साल जीना पड़ेगा. Is that possible? Yes. No. Not possible. So can I say you cannot determine the rates of very fast as well as very slow reactions? Ma'am. Yeah. Ma'am. The reactivity of halogens follow the order. This is true for any reaction. Fluorine is always the most reactive halogen and iodine is always the least reactive halogen. Do you know this? Yes, ma'am. Okay. In fact, fluorination is a very fast reaction. It occurs in less than a minute. So can you determine its rate? No, ma'am. No. Iodination is very slow. Can you determine its rate? No. No. These are moderate reactions. So can I say these can be for chlorination and bromination, you can determine the rate. Yes, ma'am. So that is how I got the selectivity factor for chlorination and bromination, but not for fluorination and iodination. Fluorination, in fact, is carried out in dark. Because, you know, sunlight here is a catalyst for this process. Am I right? Yes, ma'am. And this is already what? Fast. And it is highly exothermic also. So if you catalyze this by bringing about in sunlight, what will happen? Blast. Yes, there will be a blast. And you don't want that, correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So that is why fluorination has to be carried out in work. In what? Dark. Dark. Chlorination is carried out in diffuse sunlight. I have already done this. Yes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Bromination can be carried out in direct sunlight. And iodination is carried out in presence of sunlight and heat, and catalyst also is required. So the catalyst part I'll be taking up in the next class. Fine? Okay, ma'am. Ma'am. Ma'am, ma'am, it is said iodination is very slow. We cannot determine selectivity factor. Approximately how much time it takes for iodination? About it takes few days, I think.
So, ma'am, we can't wait for even few days. Arey, how will you, my dear? Can you stand at one particular place for a few days? Can you? No, ma'am. मैम कैमरा रख सकते हो ना? Camera se kaise? How will you find out the? See, all these, what you say? The rates are found out by some reactions, na? You have to bring about reaction. Have you done all that polarimeter वगैरह का rate kinetics किया है कि नहीं किया है? Chemical kinetics chapter हो गया है? हाँ मैम। मैम लेकिन उसमें ऐसे कुछ नहीं। उसमें unimolecular, pseudo unimolecular या मैम pseudo कुछ first नहीं पढ़ा। order ये सब किए हैं? कुछ मैम कुछ भी नहीं नहीं मैम नहीं किया मैम। नहीं है। हाँ हाँ नहीं मैम। नहीं क्या किया किया है काइनेटिक्स में? रेट कैसे फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर एंड ऑर्डर। सूडो फर्स्ट ऑर्डर नहीं, सूडो यूनिमोलिकुलर नहीं किया है? नो मैम। नहीं किया। तो मैं भी नहीं। मैम एडवांस में पोलैरिमीटर होगा। वाला नहीं किया? पोलैरिमीटर वाला एक्सपेरिमेंट नहीं किया? नहीं मैम। मैम आपने एक बार बताया था ना वही इतने। नहीं पोलैरिमीटर का वो जो चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन से वी कैन कैलकुलेट द रेट्स। मैम वो किया है फिजिक्स में होगा। आपने बोला था, आपने बोला था। इन्वर्जन नहीं ऑफ केन किया। शुगर पढ़ते हैं, सुक्रोज अगर उसका हाँ हाइड्रोलाइसिस मैम ये किया है ये किया है। किया है ये। Yes, Miss, this is gives you done. glucose and fructose, है ना, राइट? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, तो ये हाइड्रोलिसिस के दौरान क्या होता है? सुक्रोज का इनिशियल ऑप्टिकल रोटेशन इज प्लस, स्पेसिफिक रोटेशन इज प्लस 6.5 डिग्रीज, और जब हाइड्रोलिसिस कंप्लीट होता है तो फाइनल रोटेशन इसका आना चाहिए, रुको, इसका प्लस 52.7 है और इसका माइनस 91, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? माइनस 39 माइनस 39 39/2 देखना है क्योंकि कंसंट्रेशन हाफ हो गया। हाँ मैम 19.5 39/2 कितना होता है? 19.5। तो जब तक माइनस 19.5 डिग्री प्लस 65 में से माइनस 19.5 डिग्री तब जब तक नहीं जाता है, यू कीप ऑन चेकिंग द ऑप्टिकल रोटेशन आफ्टर एवरी 10 मिनट्स। आई थिंक सर मस्ट हैव डन ये नहीं किया हम लोग ने। That is how you have to wait there, and this takes place, the entire hydrolysis takes place, I think, in approximately 2 hours. मैम सर ने बस वो फॉर्मूला दिया था। सर ने बस इक्वेशन लिखा था। यस मैम। हाँ, तो मैं खाली उसका एप्लीकेशन बता रहा हूँ कैसे होता है, वो मैंने बताया, ठीक है? अच्छा मैम। तो यहाँ से आपने शुरू किया कितने से? 66.5 और आपको तब तक वेट करना है जब तक वो किस में कन्वर्ट हो जाता है फाइनली? माइनस 19.5। हाँ, और ये हो जाता है 2 घंटे के अंदर, मतलब ये रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है 2 घंटे के अंदर। यू कैन वेट देयर ना फॉर 2 hours एंड यू कैन चेक यस मैम। आफ्टर एवरी 10 minutes यू कैन कीप ऑन चेकिंग कि कितना चेंज इन रोटेशन हो रहा है, चेंज इन रोटेशन हो रहा है। और ये भी 2 hours, इट विल डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन चेंज होगा तो उसको कम टाइम लगेगा अगर डाइल्यूट लिया है या कुछ लिया है। सो दैट इज हाउ इट मैटर्स, राइट? सो आयोडीनेशन 1-2 दिन लगेगा, यू कैन नॉट स्टैंड देयर ना टुगेदर। Moderate reactions के लिए what, how are moderate reactions defined as? Which are Within not a day. very slow and very fast. अरे हाँ, very fast वाले they are defined as those reactions which occur in less than a minute. Very slow reactions which More than a occur in week. days, More than in 200. days, months or years. हाँ, so how are moderate reactions defined as? Reaction 1-2 days। at 1 day। day के लिए तो नहीं होता, less than a day। from few minutes to few hours, few minutes to few hours होता है खाली, ठीक है? तो बस उसी का काइनेटिक्स निकाला जाता है, उससे ज्यादा नहीं करते। अच्छा, और एक चीज, हम जो अभी मेथड्स कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, ये सब 200 साल पुराने मेथड्स हैं। मैंने भी अपने सिलेबस में यही सब पढ़ा है जो आप लोग पढ़ रहे हो ना। Yes ma'am. So 30 years before I have studied the same things. There is no change in the syllabus in so many years. So of course many more techniques have been formed, have been discovered. Usse you can find out the rates.
Okay. तो मैम वो सब क्यों नहीं पढ़ा? अभी तक आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ है ना. So what is the best option? Study this. No, you make me the education minister. I will change the entire syllabus. I'll incorporate all the new things. ठीक है? Is that fine? हाँ. चलो ठीक सिलेबस है. बढ़ जाएगा. हाँ, syllabus तो बढ़ जाएगा. But you'll be learning all new things, and those are more interesting than what we had done. Fine. Okay. Yes, fluorination can be used for making bombs. But who wants to use fluorination for making bombs? Harshita? There are many other reactions which can be used for making bombs. Bombs can be made at home also. Why bring about fluorination? You can have homemade bombs. जैसे घर पे खाना बना सकते हैं वैसे घर पे बॉम्ब भी बना सकते हैं. Okay? Why you supporting terrorists? No, I am not supporting terrorists. I am supporting the anti-terrorist department. सेल्फ डिफेंस के लिए भी बॉम्ब बना सकते हैं. Of course, self-defense. How can another country they can just come and kill your people? So self-defense के लिए होता है कि नहीं होता है? होता है. अगर दूसरे countries बना रहे हैं हम नहीं बनाएंगे, so will they leave us? It's They'll not such a world. क्या? It is not such a world where they would let us be. That is what. So you have to be, your defense has to be very strong. Okay. So it is not that explosives are only used by terrorists. Explosives are used even for your defense system. Right? Yes. Okay. Ma'am, knowledge of these bombs can also help us to disarm any bomb. Of course, yes. Okay. Ma'am, I had a question. हाँ बोलो. Ma'am, I remember you had told once that in when you were doing PhD, you were doing one reaction for years. Ma'am, that reaction you did, generally those reactions are very slow reactions, or they are also moderate reactions. You Those reactions, that reaction which I was doing used to, like, it was getting completed in almost, I think, 4 to 5 hours. So moderate reaction. So I used to go every day. I used to set up the reaction pura. And then 4 to 5 hours, I had to just see the reaction, take readings at intervals of time. And then I had to do the literature survey. Literature survey is very important when you do your PhD. What is literature survey? Means taking notes, means like in that journal you write about your findings, you write about apparatus. That is true. That is all your no, that is not literature survey. Literature survey means you have to actually go and read journals where you have to find out that has this reaction been earlier performed. If after 4 years you come to know that this reaction has already been done before, then can I say you'll be wasting your 4 years? Yes. Yes, ma'am. So you have to go through journals and keep on checking there कि reaction कहीं हुआ तो नहीं है, कहीं पहले हुआ तो नहीं है, कहीं अभी हो तो नहीं रहा है. All this has to be checked. Literature survey takes 6 to 8 months to be done. Every day you have to sit in the library for almost more than 11 to 12 hours to do that literature survey. So I used to first put up the reaction and go and do after that I used to go for the library work, literature survey work. Okay. So that is how we have to manage. If you're planning PhD ahead, I'll guide you later. Fine? Yes. Okay. Chalo, bye for now. I'll be starting again from iodination. Just remind me I have to do the catalyst for those. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah. Chalo, bye all of you. Rohan, you wanted page 5?
Okay. Fine, I'm ending the class now. Okay.